Myself, Dr. W.P. Gunore from Kamla Nehru Mahavidyalaya, Nagpur. Today we are discussing the new part, that is the alkynes. As we know, a cyclic compound which contain the carbon-carbon triple bond is known as alkynes, and these alkynes have general formula CnH2n-2, where n is equals to 2, 3, 4 like that, and this alkyne compound is isomeric with the dienes compound, but their properties are quite different as compared to the dienes. So in today's part we are discussing nomenclature of alkynes, that is alkane is converted into alkynes by replacing the ane of alkane by the yne. So yne means carbon-carbon triple bond. So alkane becomes now alkyne. So alkynes, nomenclature of alkynes, and after that some important methods of formation of alkynes that we are discussing in today's part. So today's topic is alkyne, and in case of alkyne, today we are discussing what are alkynes, nomenclatures of alkyne, and the structure and bonding in alkynes, and which contain carbon-carbon triple bond, and methods of preparation or formation of alkynes. So as we know, what is meant by the alkyne? Alkynes are the unsaturated hydrocarbon, or we can say a cyclic compound containing carbon-carbon triple bond are known as the alkynes, or also acetylene is the first member. So in case of alkyne are the unsaturated hydrocarbon which contain carbon-carbon triple bond, and the general formula is CnH2n-2, and this is the general formula, and where n is equals to 2, 3, 4, 5 etc. and such type of compounds are isomeric with the dienes, but as we know their properties are quite different as compared to those of the dienes. So alkynes are in alkyne there is a suffix yne. So yne means carbon-carbon triple bond. So alkane becomes now alkyne, converting ane, replacing the ane by yne. So here there are two methods of nomenclature of alkyne. One is a common names and second is IUPAC name. So we can write the name of alkyne by common methods of system of nomenclature and IUPAC. So in case of common names, in the common system, the first member of the series is the acetylene. Acetylene, CH triple bond CH. So first member is the acetylene, and higher members are generally named as derivative of acetylene. So first member is acetylene and higher members are considered as a derivative of acetylene. So we are also taking some example. And in case of second method IUPAC names, in case of IUPAC system of nomenclature, unsaturated hydrocarbon which contain triple bond is known as the alkyne. So unsaturated hydrocarbon containing triple bond which is known as the alkynes. The name of individual alkynes is obtained by replacing the terminal ane. So what is now here? In case of IUPAC, the terminal, that is the last suffix ane is replaced by the yne, and we get, so here is shown alkane minus ane and plus yne. So what is we obtain? Alkyne. So alkane becomes alkyne by replacing the ane of alkane by yne, and we obtain the compound alkynes. So these are the two methods, and here some examples are being shown in the table. So these are common names and IUPAC name. So here CH triple bond CH, the common name is acetylene, and two carbons are there, therefore ethane becomes ethyne. तो ethane का होगा ethyne. Similarly इसमें देखो CH3CH, one triple bond is there, तो it is known as methyl acetylene. इसमें क्या हो गया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, उसकी जगह CH3 है, and carbon is here. So what is now methyl acetylene. तो तीन कार्बन है, इसमें कार्बन छूट गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे, तो कार्बन इज हियर. So in place of carbon, methyl is the hydrogen, carbon is there, and three carbons are there. Therefore, it is known as propyene, yne. Three carbons. एक कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ पर है और तीसरा. And common name is methyl acetylene. Third है ethyl acetylene. And four carbons are there. Here again यहाँ पे फिर से कार्बन नहीं है, एक कार्बन CH है, यहाँ पे कार्बन है और H की जगह ये इथिल ग्रुप है, तो इसका नाम है इथिल एसिटिलीन.
और उसका नाम है 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट फ्रॉम 1 कार्बन, नंबरिंग लेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कार्बन 2 3 4 कार्बन से ब्यूटाइन 1 और 1 ब्यूटाइन। उसके बाद में है डाइमिथिल एसिटिलीन, तो डाइमिथिल ये दोनों जगह देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये मिथिल यहाँ पे है दोनों जगह, 2 H की जगह डाइमिथिल एसिटिलीन एंड ब्यूटाइन 2, 4 कार्बन है ब्यूटाइन, वाइनी है 2। उसके बाद में इथिल मिथिल एसिटिलीन, इधर मिथिल है इधर इथिल है, तो इथिल मिथिल एसिटिलीन एंड 5 कार्बन है इसलिए पेंटाइन 1 और 1 पेंटाइन। सो कॉमन नेम्स, फर्स्ट मेंबर इज एसिटिलीन, हायर मेंबर्स आर डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन एंड आईयूपीएसी नेम कितने कार्बन है वो देखना है, उसके हिसाब से फिर एन कट करके 3 है तो प्रोपेन का प्रोपाइन, 4 है ब्यूटेन का ब्यूटाइन, फिर नंबर भी देना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो इन दिस वे वी कैन राइट द नेम ऑफ अल्काइन्स बाय कॉमन नेम्स एंड द आईयूपीएसी नेम्स। Some more structures are here, IUPAC name of the branch chain alkyne and here is the one compound, उसका नंबर देना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4 कार्बन से है और 3 कार्बन पे क्या है मिथिल, तो 3 मिथिल 1 ब्यूटाइन और 3 मिथिल ब्यूटाइन, तो ये फर्स्ट बराबर है इसमें 3 मिथिल 1 ब्यूटाइन क्योंकि 1 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद में है ये कंपाउंड है, इसको भी नंबर देना पहले 1 2 3 4 5। सो आज जो अपन ने पहले देखे आईयूपीएसी के रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, वो सारे रूल्स अपने को सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, नंबर द कार्बन एटम्स एंड फिर सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, तो ये सारे आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर के रूल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन राइट द नेम ऑफ द ब्रांच चेन अल्काइन। तो इसको नंबर देंगे इधर से 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या है मिथिल, तो 4 मिथिल, 2 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड 2 पेंटाइन। इन द सिमिलर वे हियर वी कैन गिव नंबर 1 2 3 4, तो 3 डाइमिथिल 3 डाइमिथिल 1 ब्यूटाइन, और इसमें यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 पे क्या है मिथिल, तो 2 5 डाइमिथिल और 3 से स्टार्ट होता है तो 3 हेक्साइन। तो इस टाइप से आईयूपीएसी नेम ऑफ द ब्रांच चेन अल्काइन्स कैन बी वी कैन राइट हियर इन दिस वे। सो वी हैव टू यूज ऑफ IUPAC nomenclature, that is selection of long chain of the parent chain, then we have to give the number and ANE is replaced by YNE and the position of triple bond and the substituent are indicated by the Arabic numeral that is 1 2 3. The numbering of the parent chain is done in such a manner that triple bond get lowest number. So while numbering the carbon chain, triple bond gets same number from the either direction from the carbon chain in the numbered in such a way that substituent get the lowest number. The complete name of the alkyne is then obtained by indicating the position and name of the substituent separated by hyphen before the name of the parent alkyne. So we have to use all the IUPAC rules to write the name of the alkynes. So after this now we are after the nomenclature, next part is the structure and bonding of alkynes. As we know, alkyne is the first member of alkyne is the acetylene and the molecular contains 2 carbon atoms and each carbon atom is a sp hybridized and they leave 2 unhybridized 2p orbital containing 1 electron on each carbon atom. And in case of carbon atom, these carbon atoms join to each other by the overlapping of the 2 sp hybrid orbital to form sigma bond. And the 2 CH bond are formed due to sp-s overlap of the carbon and hydrogen and also forming sigma bond. Hence the molecules is linear. So acetylene molecule is a linear, and in this case because of linear geometry the bond angle is of 180 degree. The carbon-carbon triple bond present in the compound have shown here. This carbon-carbon triple bond have the length 1.20 angstrom in it, and the CH bond length is a 1.06 angstrom in it. So structure shown here is a linear structure,
and with a bond angle of 180 degree, and bond distances are there. So there is a one carbon-carbon triple bond and two hydrogens are here. So the geometry is linear, and here out of triple bond, one is a strong sigma bond and two are the pi bonds. So sp hybridized orbital of both the atoms overlap and forming strong sigma bond, and also two pi bonds are there because unhybridized orbital overlap sidewise and forming pi bonds. So in this way, the structure of this alkyne, that is first member is acetylene, have linear shape or geometry. So the remaining two pi orbital on each carbon atom perpendicular to one another as well as plane of the carbon and hydrogen atoms. Each of these unhybridized orbital of one carbon atom overlap sidewise and forming with the other and forming the pi bonds. So due to overlap of these orbitals, there exists a pi electron cloud which is symmetrical about the plane of internuclear axis. And as we know, triple bond consists of strong one sigma bond and weak two pi bonds. So sp hybridized orbital forming overlapping and forming the strong sigma bond, and the p orbital of the carbon remaining unhybridized p orbital overlap sidewise and forming the two pi bonds. So in this way, the structure of alkyne is a linear with a bond angle of 180 degree. And in this case of method of formation of alkyne, there are some important methods of formation of alkyne, and important first method is the by the action of water on the calcium carbide. So this is an important method, and from this method we obtain the alkynes. So here in this method, acetylene can be prepared in the laboratory as well as on the commercial scale by the action of water on the calcium carbide. So reaction is shown here. How the water, this is the water react with the calcium carbide, and in this case two carbons are here and two hydrogen from this is joined here, 2H. So CH, triple bond CH, and in this case now calcium, 2 OH are left, so 2 OH, so calcium hydroxide. So we obtain this ethyne, also known as common name acetylene, is obtained, and calcium carbide, which is required for this reaction, is manufactured by heating the limestone, that is calcium carbonate, with coke in an electric furnace at 2275 Kelvin. So see here how the calcium carbide is synthesized. So CaCO3, when heated at this temperature, high temperature, we obtain CaO and CO2. ये दो फॉर्म होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide gas is evolved. This calcium oxide react with the carbon coke and at this temperature and forming CaCO, calcium carbide CaC2, and in this case CO, carbon monoxide gas is evolved. So Ca and C2 and CO, carbon monoxide gas is evolved. So CaC2, calcium carbide is obtained. After that, from this we can prepare the acetylene or ethyne. So two carbons are there. So the common name is acetylene, and main compound is the ethyne. So this is the one method of formation of ethyne from calcium carbide. Second method is there, synthesis of higher alkynes from acetylene. And ethyne is the first reacted with sodium metal at 475 Kelvin or with the sodamide in liquid ammonia at 196 Kelvin to form the sodium acetylite. These upon treatment with primary alkyl halide undergo SN2 reaction to form higher alkynes. Now here reaction is shown. From the we obtain synthesis of higher alkenes, higher alkynes from the acetylene. Start from acetylene and we get higher alkynes. So many compounds are being shown here, many reactions are here. So this is the acetylene, react with the sodamide in the presence of ammonia and 196 Kelvin temperature, we obtain sodium acetylite. ये CH जैसा का वैसा है, यहाँ पे H की जगह सोडियम आ गया और अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड, ये NH2 और H और ये नहीं यहाँ पे आ गया, इसका नाम है सोडियम एसिटालाइट. Now this sodium acetylite is taken here and react with the alkyl bromide, that is methyl bromide or bromomethane. So this is the bromomethane
react with SN2 reaction, and what is now here we obtain ये CH वैसा का वैसा ट्रिपल बॉन्ड और फिर C, ये Na की जगह क्या आ गया CH3, और ये NaBr इज रिमूव्ड, ये NaBr यहाँ पे ये CH है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ये कार्बन है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, एक कंपाउंड है सोडियम एसिटेलाइट, दिस इज द कंपाउंड। तो Na और Br और ये ट्रिपल बॉन्ड से ही है, यहाँ पे इस कार्बन को अटैच होता है मीथिल, तो ये दिखा है, दिस इज द प्रोपाइन, 3 कार्बन है 1 2 3, दिस इज नॉन एज प्रोपाइन and NaBr is other product. Another reaction now, sodium acetylite react with the iodoethane, similar to that iodoethane, तो ये इथिल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है एंड NaI रिमूव हो जाता है, देखो इथिल ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन, इसका नाम है 4 कार्बन है तो 1 ब्यूटाइन। सिमिलरली सोडियम एसिटाइलाइट रिएक्ट विद द n प्रोपिल ब्रोमाइड, तो n प्रोपिल ब्रोमाइड, तो ये दोनों होने के बाद ये जो प्रोपाइल ग्रुप है इसको अटैच होता है और सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलता है, देखो प्रोपाइल ग्रुप इसका जॉइन है। ये एसिटिलीन है, react with the sodamide and 2 molecules of ammonia is evolved, and in this case both the carbon have now replaced hydrogen and having 2 sodium, so disodium acetylite, जैसा इसमें एक निकाला था और ये सोडियम एसिटाइलाइट दूसरा भी हाइड्रोजन निकले के फिर आ गया Na, तो ये 2 मॉलिक्यूल लिया NaNH2, सो ये हो गया डाइसोडियम एसिटाइलाइट। फिर मिथिल आयोडाइड, तो 2 मिथिल ये क्या पे आएगा, एक दूसरा आएगा, और फिर क्या 2 Na और 2 NaI, ये 2 Na और 2I ये निकल जाएगा और मिलेगा ये कंपाउंड, इसका नाम है 2 ब्यूटाइन, 4 कार्बन से 2 ब्यूटाइन। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन फ्रॉम एसिटिलीन। थर्ड मेथड इज बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलोअल्केन्स। D मीन्स रिमूवल, हाइड्रोहैलोजिनेशन, तो इसमें से निकालना है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो हाउ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इन दिस केस अल्काइन आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलोअल्केन्स and by heating them with the alcoholic solution of potassium hydroxide. So see the reaction, very simple reaction is here. This is the vicinal dihalide and here X may be halogen, chlorine, bromine, iodine. This is general reaction. यहाँ से in the presence of alcoholic KOH, इसमें से क्या निकलता है KX और वाटर, तो ये OH और यहाँ का एक EH, तो KOH निकल जाता है, वाटर निकलता है और KX, एक K और X, मतलब ये जो 2 कार्बन है इसमें से ये निकलते हैं और एक वहाँ पे X रहता है, तो यहाँ पे जो है इन दिस केस KX इज रिमूव्ड, ये पोटेशियम और X, उसके बाद में OH और यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या आता है इस टाइप से, ये डबल बॉन्ड है क्योंकि वहाँ से निकालापन है दोनों कार्बन से, और उधर में रहा फिर बाकी R और H, इधर में X और R, फिर से रिएक्शन विद KOH और इसमें से निकलेगा KX और OH वाटर, तो क्या मिलेगा RC, ट्रिपल बॉन्ड RC, फिर से दोनों कार्बन से यहाँ से X निकला, यहाँ से H, तो क्या हो गया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और ये कंपाउंड मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R', इसका नाम है अल्काइन। ये जनरल रिएक्शन है एंड हियर R एंड R' में भी अल्किल और अरेल ग्रुप्स, तो ये एग्जांपल दिया इसमें 1,2 डाइब्रोमोइथेन, ये 1,2 डाइब्रोमोइथेन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, जैसा पहले देखा जनरल रिएक्शन वैसा ही, हिट दिस देन व्हाट इज KBr, एक निकल जाएगा और यहाँ का EH और OH वाटर निकलेगा, तो ये कंपाउंड आ गया विनाइल ब्रोमाइड। अगेन अनदर रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH एंड के, इसमें क्या होता है हीट करने के बाद यहाँ से KBr और H और ये OH वाटर, तो क्या मिला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिटिलीन इज ऑब्टेन्ड। सो हायर अल्केन कैन आल्सो बी, अल्काइन कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड, सो एसिटिलीन हायर अल्काइन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलोअल्केन्स, तो 2 हैलोजेंस हैं अल्केन्स में, तो उसमें से वो निकाल के वी गेट दी अल्काइन स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ नंबर रिएक्शन इज बाय डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, तो टेट्राहैलाइड से मतलब 4 हैलोजेंस है 1 2 3 4 एंड डिहैलोजिनेशन करना है तो मिलेगा अपने को अल्काइंस।
तो tetrahaloalkanes when heated with zinc dust in methanol undergo dehalogenation. D means removal, halogen. Removal of halogen, we obtain the alkynes. By dehalogenation of tetrahalides, we obtain alkynes. So see the reaction. This reaction is taking place when it is heated with the zinc dust. So this is the general reaction. 2 halogens and 2 halogens. 4 halogens are here. R dash are the alkyl group. When this react with the zinc methanol, we have to heat. तो जिंक X2 ये यहाँ से निकल जाएंगे, तो एक डबल बॉन्ड आ गया. फिर से जिंक के साथ रिएक्ट होगा और फिर से जिंक और ये X और ये दोनों X, तो फिर बाकी बचा है RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश. तो इस टाइप से जिंक हलाइड निकल जाएगा और वी गेट दिस इज द अल्काइन. And now 1122 tetrabromoethane, when we take it react with the zinc, and when it is heated with the zinc we obtain zinc bromide. ये निकल जाएगा जिंक ब्रोमाइड, तो ये जिंक और ये 2Br डबल बॉन्ड आ गया. फिर से जिंक और ये Br और ये Br Zn Br2 निकल जाएगा, तो वी गेट दी CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन. इस टाइप से ये dehalogenation of the tetrahalide we obtain what is the alkynes, that is acetylene. So acetylene alkyne can be obtained by dehalogenation of tetrahalide. And next method is number 5 is the dehalogenation of the haloform. Haloform is chloroform, iodoform like that. उसमें से भी क्या निकालना है, dehalogenation मतलब halogen निकालना है, तो we get the alkyne. Chloroform or iodoform on heating with the silver powder it undergoes the dehalogenation and forming the ethyne. So see the reaction. एक chloroform है CHCl3, another second molecule CHCl3, 6 molecule of silver. So we have to heat silver powder with the chloroform. And now ये देखो यहाँ से 6Ag and 6Cl, 6AgCl और बचा क्या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया इथाइन acetylene. In the similar way, if you take iodoform, similar type of reaction. In the place in place of chloroform, now we have taken iodoform CHI3 CHI3 और 6Ag, तो 6AgI और ये ethyne acetylene. So this is simple method of preparation of by the dehalogenation of haloform from chloroform or from iodoform. We obtain ethyne or acetylene. 6 number method is Kolbe's electrolytic reaction, and acetylene can also be prepared by electrolysis. As we know what is electrolysis, when we pass the current through the solution of this and we obtain the at anode and at cathode we get ions, and now by this electrolysis 2 ions are moving oppositely charged electron and we obtain the desired product. So by using these alkynes can be prepared by electrolysis of concentrated solution of sodium or potassium salt of malic acid or fumaric acid. So this is the potassium salt of here this is the name potassium maleate, Sig isomer, and potassium fumarate, trans isomer. Sig is malic acid and fumaric acid. So here potassium salt of potassium maleate and this is the potassium fumarate. तो ये Sig और trans ये difference है दोनों में. Malic acid and fumaric acid are the isomers. One is Sig isomer, another is trans isomer. Any one we can take here, then it react with water is added and electrolysis is taking place. What is we get then? CH and CH and CO2 दो निकल जाएंगे, ये CO2 एक, यहाँ से CO2 दूसरा. Hydrogen can also be removed and 2 KOH. So in this way 2 OH are here, 1 hydrogen is here. So 2 KOH, तो ये इतना है ये कंपाउंड और ये 2H2O. When we do the electrolysis ये acetylene मिलेगा, ये 2K और यहाँ से 2 OH, 2 KOH, हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और ये CO2 यहाँ से एक, यहाँ से दो. इस टाइप से we are obtaining the acetylene molecules. So by electrolysis we obtain acetylene, and this reaction is called Kolbe's electrolytic reaction because it occurs by the following steps. See the reaction. ये जो पोटेशियम मैलिएट है इसका आयनाइजेशन होगा, तो इस टाइप से पोटेशियम आयन सेपरेट हो जाएंगे और ये आयन्स पॉजिटिव नेगेटिव आयन. एंड दिस इज द रिएक्शन एट नाउ. इसके बाद में ये जो है वाटर है इसका आयनाइजेशन कैसा होगा 2OH - 2H+.
तो पहले जो दिया है दीज आर आयनाइजेशन। तो एनोड पे क्या होता है, दीज नेगेटिव आयन and 2 electron forming this type of loses 2 electron and forming this type of unstable compound, and after that we get acetylene and CO2 get evolved. And at cathode we these 2H plus and these 2 electrons are added and become 2 hydrogen and hydrogen gas is evolved. So at the anode we get the acetylene. So this is the method of electrolysis known as Kolbe electrolysis, and from this we obtain ethylene. What is the acetylene or ethyne? This is also important method. And one more method is there, that is synthesis from carbon and hydrogen. As we know, acetylene also be synthesized or prepared by passing the stream of hydrogen through the electric arc between carbon electrodes. So see here, when the hydrogen gas is passed through the carbon through the electric arc at high temperature 3273 Kelvin. So this is the, we have to take two carbon, hydrogen when we pass. What is then? CH, triple bond CH. Acetylene is obtained. So this is simple method. So acetylene can be prepared by passing the stream of hydrogen through the electric arc, and we obtain the acetylene compound. So these are the different methods of the preparation of acetylene or ethylene or alkynes. And in this case, as we know, today we have seen what is alkyne, nomenclature of alkyne by two methods, common and the IUPAC. And acetylene is the first member, and higher members are known as the derivative of acetylene. And different methods of formation of acetylene or the alkynes we have seen. And so today we stop here, and in the next part we will discuss about the important chemical reactions of alkynes.